Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome all of you to this auspicious ceremony of launching of ASW Shallow Water Craft Yard 3035 being built by GRSE for Indian Navy. I, Swagata Sen Roy, am joined by my colleague, Mr. Manish Kumar Singh, and we're especially pleased to host this event today. On this historic occasion, to be in the company of this august gathering is itself a glorious moment. This program is going live on GRSE YouTube channel. We are already live on the GRSE YouTube channel. Request kindly maintain silence. नमस्कार देवी और सज्जनों, आज जीआरएसई से भारतीय नौसेना हेतु निर्मित एएसडब्ल्यू सैलो वाटरक्राफ्ट यार्ड 3035 के इस पावन जलावतरण समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं मनीष कुमार सिंह और मेरी सहयोगी श्रीमती स्वागता सेन रॉय आज के इस समारोह की मेजबानी करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इस सम्मानीय जनसमूह के सानिध्य में होना अपने आप में गौरव का क्षण है। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह कार्यक्रम जीआरएसई के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है। अतः आपसे कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखने का अनुरोध है। On behalf of GRSE, we wish to extend a warm welcome to all the distinguished guests from the Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Ministry of Defense, senior officials from central and state government, industry partners, our other business associates, members of the media, and the GRSE family. जीआरएसई की ओर से हम थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, रक्षा मंत्रालय से आए सभी गणमान्य अतिथियों, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग साझेदारों, हमारे अन्य व्यापार सहयोगियों, मीडिया सदस्यों और जीआरएसई परिवारों से उपस्थित सदस्यों व उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। This event is being telecast on GRSE YouTube channel as announced earlier, and we are extremely grateful and obliged to all our viewers watching this program live on the channel today. जैसा कि हमने पहले बताया, इस समारोह का लाइव प्रसारण जीआरएसई के यूट्यूब चैनल पर हो रहा है और हम बेहद आभारी हैं उन सभी दर्शकों के प्रति भी जो आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। Ladies and gentlemen, to capture your presence at this historic launch, we have created a photo corner. Kindly get your photos clicked and please collect your photographs from the photo corner counter on your way back. देवी और सज्जनों, इस ऐतिहासिक जलावतरण के अवसर पर आपकी उपस्थिति को सहेजने हेतु हमने एक फोटो कॉर्नर का निर्माण किया है। आप अपना फोटो इस फोटो कॉर्नर में खिंचवा सकते हैं और कार्यक्रम के पश्चात उसी फोटो कॉर्नर काउंटर से अपना फोटो प्राप्त कर सकते हैं। The launching of ASW Shallow Water Craft Yard 3035 being built by GRSE for Indian Navy this afternoon would mark another significant event that will go down the annals of GRSE's history. This majestic ship in front of you shall be launched today by Srimati Shashi Tripathi, President, Navy Wives Welfare Association, Western Region. The chief guest for today's function is Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSMNM, FOCNC Western Naval Command. And the guest of honor is none other than Shri Arun Lal, former Indian cricketer, who is also a renowned cricket commentator and was the head coach of Bengal cricket team. भारतीय नौसेना हेतु निर्मित एएसडब्ल्यू सैलो वाटरक्राफ्ट यार्ड 3035 का आज इस अपराह्न बेला में जलावतरण जीआरएसई के इतिहास में एक और स्वर्णिम उपलब्धि को दर्शाता है। आपके समक्ष खड़े इस अद्भुत पोत का जलावतरण अब से कुछ ही समय के पश्चात आज की हमारी विशिष्ट महिला अतिथि नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्षा श्रीमती शशि त्रिपाठी के कर कमलों से संपन्न होगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसीएनसी वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया का एक विख्यात नाम तथा बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच श्री अरुण लाल हैं। Ladies and gentlemen, we have
our former CMD, Admiral Verma, here with us. Sir, we welcome you on behalf of GRSE and extend our wishes and greetings to you. देवियों और सज्जनों, हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल A.K. वर्मा का आगमन हो चुका है। हम GRSE परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। The chief guest for today's launching ceremony is Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSMNM, FOCNC Western Naval Command. Vice Admiral Dinesh K. Tripathi assumed command of Western Naval Command on 28 February 2023. He's an alumnus of Sainik School, Rewa, and National Defense Academy, Kadakwasla. He was commissioned into the Indian Navy as a communication and electronic warfare specialist and served on board Virat, Kothar, and Ranveer as SCO and EWO. His command assignments include command of Vinash, missile vessel, Kirch, missile corvette, and Trishul, guided missile frigate. During his command of INS Kirch, the ship played a vital role in HADR operations on the tsunami-affected east coast of India. The flag officer was awarded Nausena Medal for his contribution to these HADR operations. His other seagoing appointments include Executive Officer and Principal Warfare Officer of Guided Missile Destroyer INS Mumbai, Fleet EW Officer, Fleet Communication Officer, and Fleet Operations Officer of the Western Fleet. He has held various important operational and staff appointments, which include Director of Naval Operations, Principal Director, Network-Centric Operations, and Principal Director, Naval Plans. Upon being promoted to flag rank, the officer was appointed as Assistant Chief of Naval Staff, Policy and Plans at Naval Headquarters. During his command as Flag Officer commanding Eastern Fleet, the fleet saw significant action at sea in terms of deployment of units in Indian Ocean region and beyond. At the forefront of the operational activities, the flag officer spearheaded successful mission planning and execution of operational orders during the maiden Eastern Naval Command operational readiness exercise, during which the ships sustained at sea for over a month without any operational turnaround. Keeping up operational tempo, he led the multinational task force of 20 warships, including 11 foreign warships, including Milan exercise at sea. The flag officer led Eastern Fleet ships through a successful prolonged overseas deployment into the South China Sea and Pacific Ocean, wherein the ships visited 6 countries, including a maiden visit to Guam, USA, in the North Pacific. The successful completion of the fleet command tenure brought to an end about 20 years of cumulative sea service in his distinguished naval career of over 36 years. On promotion to the rank of Vice Admiral in June 19, the flag officer was appointed as Commandant of Indian Naval Academy. The Academy was awarded the President's Color in November 2019 by the Supreme Commander. Thereafter, he was appointed as the Director General of Naval Operations, during which he ensured that Navy remained combat ready in the wake of situation on the LAC despite all-round severity of COVID pandemic. After that, the flag officer served as the Chief of Personnel, wherein he was at the helm of implementation of the Agnipath scheme. In this appointment, he also played an instrumental role in induction of women into the Indian Navy across all branches and cadres. He is a graduate of Defense Service Staff College, Wellington, where he was awarded the Timaya Medal. Vice Admiral Dinesh K. Tripathi has attended Naval Higher Command course and the Naval Command College at the U.S. Naval War College, Newport, where he won the Robert E. Badman International Prize. He is a recipient of Ati Vishesh Seva Medal and Nausena Medal for devotion to duty. He is a keen sportsman and avidly follows golf, tennis, badminton, and cricket. The flag officer is a student of international relations, military history, and art of leadership. He is married to Mrs. Shashi Tripathi, an artist and homemaker, and the couple have one son who is a practicing lawyer. देवियों और सज्जनों, आज के हमारे मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
एवीएसएम एनएम ने 28 फरवरी 23 को पश्चिमी नौसेना कमान का पदभार संभाला। वह सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के भूतपूर्व छात्र हैं। उन्हें संचार और इलेक्ट्रॉनिक विद्य विशेषज्ञ के रूप में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था एवं उन्होंने विराट, कुथर और रणवीर पर SCO एवं EWO के रूप में ऑन बोर्ड कार्य किया है। उन्होंने भारतीय नौसेना के पोतों विनाश, किर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। INS किर्च पर उनके कमान के दौरान पोत ने भारत के सुनामी प्रभावित पूर्वी तट पर HADR ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्लैग ऑफिसर को इन HADR ऑपरेशंस में उनके योगदान हेतु नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। उनके अन्य समुद्री नियुक्तियों में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी, फ्लीट EW ऑफिसर, पश्चिमी फ्लीट के फ्लीट कम्युनिकेशन अधिकारी और फ्लीट ऑपरेशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति शामिल है। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन व स्टाफ नियुक्तियां भी संभाली हैं, जिनमें नौसेना ऑपरेशंस के निदेशक, नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशंस के प्रधान निदेशक और प्रधान नौसेना योजना निदेशक शामिल है। फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के पश्चात उन्हें नौसेना मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख, नीति और योजना के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्वी फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में उनकी कमान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भी यूनिटों की तैनाती के मामले में फ्लैट ने महत्वपूर्ण कार्रवाई देखी। परिचालन गतिविधियों के मोर्चे पर फ्लैग ऑफिसर ने प्रथम पूर्वी नौसेना कमान ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज के दौरान सफल मिशन योजना और परिचालन आदेशों के निष्पादन का नेतृत्व किया, जिसके दौरान पोत बिना किसी ऑपरेशनल टर्नअराउंड के 1 माह से अधिक समय तक समुद्र में डटे रहे। ऑपरेशनल टेम्पो को बनाए रखते हुए उन्होंने समुद्र से मिलन एक्सरसाइज के दौरान 11 विदेशी युद्धपोतों सहित 20 युद्धपोतों के बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स का नेतृत्व किया। फ्लैग ऑफिसर दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में लंबे समय तक एक सफल विदेशी तैनाती के माध्यम से पूर्वी समूह के पोतों का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें पोतों ने उत्तरी प्रशांत में गुआम US की पहली यात्रा सहित 6 देशों का दौरा किया। उनकी 36 वर्षों से अधिक की विशिष्ट नौसैनिक सेवा में लगभग 20 वर्षों की संचयी समुद्री सेवा फ्लीट कमान के कार्यकाल के सफल समापन से समाप्त हुआ। जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति के उपरांत फ्लैग ऑफिसर को भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। अकादमी को सुप्रीम कमांडर द्वारा नवंबर 2019 में प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्होंने नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नौसेना कोविड महामारी की गंभीर परिस्थितियों के बावजूद नौसेना LAC परिस्थिति के मद्देनजर युद्ध के लिए तैयार रहे। उसके पश्चात फ्लैग ऑफिसर ने कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहां वे अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के शीर्ष पर थे। इस नियुक्ति में उन्होंने सभी शाखाओं और संवर्गों में भारतीय नौसेना में महिलाओं को शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक हैं, जहां उन्हें थिमैया पदक से सम्मानित किया गया था। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने न्यूपोर्ट स्थित US नेवल वार कॉलेज में नेवल हायर कमान कोर्स और नेवल कमान कॉलेज में भी भाग लिया, जहां उन्हें प्रतिष्ठित रॉबर्ट E. बैटमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। वह कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक के प्राप्तकर्ता हैं। वह एक खिलाड़ी भी हैं और गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट में रुचि रखते हैं। फ्लैग ऑफिसर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सैन्य इतिहास और नेतृत्व की कला तथा विज्ञान के विद्यार्थी हैं। उनका विवाह श्रीमती शशि त्रिपाठी से हुआ है, जो एक कलाकार और गृहिणी है, तथा उनका एक सुपुत्र है जो पेशे से वकील हैं। Ladies and gentlemen, Vice Admiral Kiran Deshmukh, AVSM VSM CWPNA has arrived. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to him. देवी और सज्जनों, वाइस एडमिरल किरण देशमुख AVSM VSM
CWPMA का आगमन हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से GRSE उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। The guest of honor for today's launching ceremony, ladies and gentlemen, is none other than Shri Arun Lal, former Indian cricketer and cricket commentator and head coach of Bengal cricket team. Shri Arun Lal is a former Indian cricketer and a cricket commentator. He played for India as a right-handed batsman between 1982 and 1989 and was a gritty player. His columns about cricket analysis regularly appear in newspaper and internet columns. He moved from Delhi to Calcutta in 1979 and started a cricket academy. He joined the Bengal cricket team in 1981 and presently serves as their head coach. Shri Lal did his schooling at Mayo College, Ajmer, and completed his master's in economics from St. Stephen's College, Delhi University. In 1982, he made his test debut against Sri Lanka at Madras with 63 and shared a partnership of 156 with Sunil Gavaskar. In his next test, he scored 51 against Pakistan and shared an opening partnership with Sunil Gavaskar for 105. His highest test innings score is 93, made against West Indies at Calcutta in 1987. At the Indian domestic level, he represented the Bengal cricket team and the Delhi cricket team, where he has a record of scoring over 10,000 runs with a top score of 287 and a batting average of 46.94. He resigned from domestic cricket in March 2001. His last club match was for East Bengal. He represented Bengal in the iconic Doordarshan national integration song Mile Sur Mera Tumhara. In that, he comes out of the Kolkata Metro Rail. He usually commentates on matches India plays at home, which are broadcast by Star Sports. Arun Lal was conferred with the Lifetime Achievement Award by the Cricket Association of Bengal on the 3rd of August 2019. देवी और सज्जनों, आज के इस जलावतरण समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं क्रिकेट कमेंटेटर व बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच श्री अरुण लाल हैं। श्री अरुण लाल एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं। वे अपने दौर के एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1982 से 1989 के बीच भारत के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके क्रिकेट विश्लेषण संबंधी लेख अखबारों और इंटरनेट पर नियमित रूप से हम पढ़ते रहे हैं। वे 1979 में दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो गए और यहाँ उन्होंने एक क्रिकेट अकादमी की शुरुआत भी की। वह 1981 में बंगाल क्रिकेट टीम में शामिल हुए और उसके मुख्य कोच के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। श्री अरुण लाल ने अपनी स्कूली शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से किया है और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान सन 1982 में उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध मद्रास में 63 रनों के साथ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और महान सुनील गावस्कर के साथ 156 रनों की अहम साझेदारी में अपनी भूमिका निभाई थी। अपने अगले टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 51 महत्वपूर्ण रन बनाए और सुनील गावस्कर के साथ 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। उनका टेस्ट क्रिकेट में उच्चतम स्कोर 93 रन है, जो उन्होंने 1987 में कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। भारतीय घरेलू स्तर पर उन्होंने बंगाल क्रिकेट टीम और दिल्ली क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जहां उनका शीर्ष स्कोर 287 रन और 46.93 के शानदार बल्लेबाजी औसत के साथ 10,000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शामिल है। उन्होंने मार्च 2001 में घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी क्लब मैच ईस्ट बंगाल के लिए था। उन्हें दूरदर्शन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल है, जिसमें वो कोलकाता मेट्रो रेल से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। वह आमतौर पर उन मैचों में कमेंट्री करते हैं जो भारत अपनी जमीन पर खेलता है और जिसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। श्री अरुण लाल को 3 अगस्त 2019 को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
Ladies and gentlemen, our guest of honor Shri Arun Lal and Srimati Bulbul Lal have arrived. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. देवी और सज्जनों, आज के इस समारोह के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरुण लाल एवं श्रीमती बुलबुल लाल का शुभागमन हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से जीआरएसई उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। A hearty welcome to our guest of honor, Shri Arun Lal and Srimati Bulbul Lal. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. हमारे आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण लाल एवं श्रीमती बुलबुल लाल का जीआरएसई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। Launching of a ship is an important milestone in the life of a ship. It marks the completion of main hull of the ship and putting the ship in water for the first time. After launching, balance outfitting of equipment and ship systems are completed and ship is put into the water for trials before commissioning. This ship here in front of you shall be launched by Srimati Shashi Tripathi, President, Navy Wise Welfare Association, Western Region. पोत का जलावतरण किसी पोत के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। पोत के जलावतरण का तात्पर्य पोत के मुख्य हल का तैयार होना और उसे पहली बार जल में उतारना है। जलावतरण के पश्चात उपकरणों और पोत प्रणालियों का फिटिंग आउट कार्य पूरा किया जाएगा और इस पोत को पर्वतीकरण से पूर्व समुद्री परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। आपके समक्ष खड़े इस पोत का जलावतरण नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्षा श्रीमती शशि त्रिपाठी के कर कमलों से संपन्न होगा। The journey of our shipyard began in 1884 when the River Steam Navigation Company was originally set up as an inland water transport company for trade between Calcutta and the settlements situated on the Hooghly, Ganges and Brahmaputra rivers with its registered office in London. In order to repair the vessels belonging to RSNC, a workshop was established in 1884 on the banks of the river Hooghly. This workshop formed the origin of this historical company, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, which has today grown into a premier shipyard of India under the administrative control of the Ministry of Defence, Government of India, building state-of-the-art warships for the Indian Navy and Indian Coast Guard. During the World War II, Garden Reach Workshop made its mark in carrying out construction, conversion, and repair of over 4,000 naval and merchant vessels. 19th April 1960 formed a new dawn for the company when it was taken over by the Government of India. Thus started the journey on a new course with many firsts created along the way. As we await the arrival of the chief guest, request all our guests to kindly take their seats, please.
A PCMM Level 2 certified company, the shipyard was conferred the status of Mini Ratna Category 1 in 2006. Since 1960, GRSE has built 789 platforms, including 108 warships for the maritime forces, the highest number of warships built and delivered by any Indian shipyard till date. Shipbuilding has been the core business vertical, and the shipyard has modernized its infrastructure spread across the 3 ship production locations in Kolkata. With integrated ship construction using modular construction technology, we are equipped to construct 20 ships concurrently, powered with a strong team of multidisciplinary design engineers creating innovative designs for current and future-ready warships. The state-of-the-art virtual reality lab and the latest design software aid the design team in their efforts towards innovation in ship design using better ergonomics. देवी और सज्जनों, इस समारोह का लाइव प्रसारण जीआरएसई के यूट्यूब चैनल पर हो रहा है और हम बेहद आभारी हैं उन सभी दर्शकों के प्रति भी जो आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, जीआरएसई की गौरवशाली यात्रा 1884 में शुरू हुई, जब हुगली, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित उपनिवेशों एवं कलकत्ता के बीच व्यापार के लिए एक अंतर्देशीय जल परिवहन कंपनी के रूप में रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई। इसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में था। रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी के जलयानों की मरम्मत करने के लिए 1884 में हुगली नदी के तट पर एक वर्कशॉप की स्थापना की गई। इस वर्कशॉप से ही इस ऐतिहासिक कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की उत्पत्ति हुई, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आज भारत की एक प्रमुख शिपयार्ड है और भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल के लिए अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गार्डन रीच वर्कशॉप ने 4000 से अधिक नौसैनिक और व्यापारिक जलयानों का निर्माण, रूपांतरण एवं मरम्मत करके अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 19 अप्रैल 1960 कंपनी के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। इसी के साथ कंपनी की एक नई यात्रा आरंभ हुई, जिसमें कई कीर्तिमानों को स्थापित करते हुए देश में किए गए ऐसे अनेक प्रथम अभिनव कार्यों को करने का गौरव जीआरएसई को हासिल हुआ। देवी और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे जो भी लॉन्चिंग साइट पर जो भी कर्मचारी, अधिकारी एवं हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, उन सभी से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया खड़े न रहें, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। GRSE is currently executing 6 shipbuilding projects for Indian Navy, Government of West Bengal, and friendly foreign countries like Bangladesh and Guyana. These projects include the P-17 Alpha project for 3 advanced frigates, 2 projects, one on competitive bidding, including 4 survey vessels large and 8 anti-submarine warfare shallow water crafts, and 6 patrol boats for Government of Bangladesh, also one on competitive bidding. Ladies and gentlemen, Vice Admiral Kiran Deshmukh, AVSM, VSM, CWPNA has arrived. On behalf of all present here, we extend a warm welcome to him. Ladies and gentlemen, Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSM, NM, FOCNC Western Naval Command, and Srimati Shashi Tripathi have arrived. GRSE is deeply honored by their esteemed presence on this occasion.
On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. देवी और सज्जनों, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एवीएसएम एनएम एफओसी इनसी वेस्टर्न नेवल कमांड एवं श्रीमती शशि त्रिपाठी का शुभागमन हो चुका है। जीआरएसई उनकी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से जीआरएसई उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एवीएसएम एनएम एफओसी इनसी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। Ladies and gentlemen, we begin the traditional part of the launching ceremony today with Ganesh Vandana. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। I now request Commodore P.R. Hari, Indian Navy retired, Chairman and Managing Director, GRSE, to the podium for the welcome address. Vice Admiral Dinesh Tripathi, Commander-in-Chief, Western Naval Command. Mrs. Shashi Tripathi, President, Navy Welfare and Wellness Association, Western Region. Sri Arun Lal, our guest of honor for the day, and Mrs. Bulbul Lal, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Controller, Warship Production and Acquisition, Admiral Anil Kumar Verma, ex-Chairman and Managing Director, GRSE, Rear Admiral Sandeep Mehta, Assistant Controller, Warship Production and Acquisition, and the other flag officers who are present here, Directors and Chief Vigilance Officer, GRSE, senior officers from the armed forces and other dignitaries, representatives of the various unions and associations, representatives of the Classification Society, the Indian Register of Shipping, friends from media, ladies and gentlemen, and dear students. I can see students in large numbers from various educational institutions who are present here. The weather gods who are looking after the Kolkata region and GRSE have got a very unique relationship. Whenever we are planning an event of this magnitude, be it winter, spring, or the peak of summer, these weather gods have been singularly showering their love and affection repeatedly. This time too, there has been no exception.
and the last few days have been heavily overcast with incessant rains. Today we have sought a respite, and here we are. At the outset, we are indeed honored to have Admiral Tripathi amongst us today, despite a very busy schedule. We are also deeply honored to have Mrs. Shashi Tripathi here amongst us today, and also for consenting first to name and thereafter launch this graceful warship in front of you. Many of you, every patriotic Indian, would have seen a graceful gentleman stepping out of the Kolkata metro with arguably the best song on national integration, Mere Sur Mera Tumala, playing in the background. Sri Arun Lal, an ace cricketer, an outstanding commentator, and an excellent coach, and above all, a true fighter. His presence today provides a special touch to this momentous occasion. Garden Ridge Shipbuilders and the Indian Navy go a long way back, and the 63 years of our coexistence has seen tremendous growth for both the organizations. We at GRSE are indeed proud to have partnered the Navy in its quest for attaining blue water capability, and also in its transition from a buyer's Navy to a builder's Navy. 70 warships delivered to the Indian Navy and 15 more under various stages of construction. Don't these sheer numbers reflect the strength of this partnership? And these platforms range from missile boats to fast-track crafts, to survey vessels, to landing crafts, to corvettes, to frigates, and now anti-submarine shallow water crafts and advanced frigates. GRSE is a diversified company, and our USP is our product profile. From warships to commercial ships, to diesel engines, to deck machinery, to portable steel bridges, the company is doing well, both in terms of physical and financial performance. But this journey has not been without any challenges, be it the nuances of telescopic design, be it the creeping changes in scope of work after the contract is signed, be it the complex trials, acceptance procedures involving multiple stakeholders, be it the unique challenges, interesting challenges of being the government entity competing with private players. But 108 warships so far and going strong. And that would not have been possible but for the resilience and resolve of all the stakeholders. The stakeholders are very much here. The Indian Navy, our most valued customer, our industry partners, the OEMs, the MSMEs, the subcontracted workforce, and finally Team GRSE. Coming to the specific project, this is the anti-submarine shallow water craft project for construction of 16 warships, 8 by GRSE and 8 by one of our sister shipyards. The first ship of this project was launched on 21st December 2022, and within 3 months of launching the first ship, here we are today to launch the second ship. I am indeed happy and proud to inform you that for the design of this ship, GRSE was awarded the Raksha Mantri's Trophy during 2022. Here, I would like to take a pause and pay homage to the departed souls of 2 of our contracted workforce who passed away in an unfortunate accident during the course of construction of this ship. For making this launch a reality, a launch with over 42% of physical construction, I must place on record my deep appreciation to a multitude of stakeholders, the Indian Navy, the Naval Headquarters, both the production and professional directorates, for their clear understanding as to why
quick decisions and prompt decisions are important. The Warship Overseeing Team Kolkata for their professional overseeing, the Classification Society, and our industry partners and the subcontracted workforce, and finally Team GRSE, all the stakeholders from GRSE, be it the planning and project management teams, be it the design teams, the quality assurance, the production, the commercial, and all the support services for their exemplary effort. I conclude by thanking Admiral Tripathi, Mrs. Shashi Tripathi, Shri Arun Lal and Mrs. Bulbul Lal, and all those who are present here for gracing this occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एवीएसएम एनएम एफओसी इन सी वेस्टर्न नेवल कमांड उपस्थित हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से सादर अनुरोध है कि वे कृपया इस विशिष्ट जनसमूह को संबोधित करें। Check. Okay. Vice Admiral Kiran Deshmukh, Controller Warship Production and Acquisition. Rear Admiral Sandeep Mehta, ACCP and ACWPNA. Commodore Hari, the CMD of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. Shri Arun Lal, our esteemed guest of honor, Mrs. Lal, Mrs. Hari, distinguished guests, senior officers, our friends from the media here, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. My wife and I are indeed honored to be present here in the city of joy and at GRSE this afternoon to participate in the launching ceremony of the second ship of the ASW Shallow Watercraft project. At the outset, I want to convey my felicitations to GRSE on achieving this milestone for the project highly efficiently. Now, with almost entire equipment of the ship being indigenous, the project is in line with our government's quest for Atmanirbharta. It is interesting to note that our Navy's first indigenous warship was produced here by GRSE in 1961. A big round of applause, please. Now, ladies and gentlemen, I'm sure most of you know, and I would repeat, that India was, India is, and India will always remain a maritime nation. The prosperity and well-being of our people depend on the security of the seas around us. You would also know that Indian Navy is the prime manifestation of our country's maritime power to safeguard our national maritime interests. Obviously, this calls for a strong and well-balanced Navy, which is multidimensional, of which surface ships like this, what we are going to launch today, are an important element to provide the requisite maritime security, especially to our sea lines of communication, which carries our trade and energy supplies. Now, construction of specialized ships such as these for anti-submarine warfare is indeed in sync
with provisioning of a combat-ready, credible, cohesive, and future-proof force, which is ready to face the existing and future challenges in the maritime domain. I am happy to inform you the ship to be launched today has made quick progress during construction, notwithstanding the vicissitudes of shipbuilding, as we all know. I am also aware that various stakeholders, such as the Naval Headquarters, the shipyard, and other agencies, are addressing the various pending issues, especially the supply of the hull-mounted sonar for these ships through contract amendment. I take this opportunity to congratulate the GRSE for being the only DPSE shipyard for receiving the Raksha Mantri Award 2022 for designing the ASW shallow watercraft. As has been mentioned by the CMD, the entire design of the ship has been undertaken in-house by GRSE, and the shipyard has demonstrated commendable proactiveness in concert with the Indian Navy. I would also like to compliment everyone in GRSE, from workers to supervisors and the managers to senior leadership, for building 108 warships to date, which is the highest number delivered by any Indian shipyard. I am sanguine that the yard will continue to raise the bar and will build more capable and potent warships, not only for our Navy and Coast Guard, but also for our friendly foreign countries in the years to come, which is in support of our Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region. I think heavens are also demonstrating their joy on this occasion. I would once again congratulate Team GRSE, the Indian Navy, and all stakeholders for today's achievement. I'm confident that the ship will be delivered on schedule, meeting all the expected quality standards by the Navy. I wish all concerned the very best. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind and Shano Varuna. सर, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request our CMD to honor Vice Admiral Dinesh Tripathi, FOC in Sea Western Naval Command, with a memento. हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए May I now request our chief guest, Vice Admiral Dinesh Tripathi, to kindly present Shri Arun Lal with a memento. हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण लाल को हमारे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हम बेहद आभारी हैं हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का। May I now request our CMD to honor Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWPNA, with a memento. हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वाइस एडमिरल किरण देशमुख CWPNA को सम्मानित किया जा रहा है।
I now request Srimati Priya Hari to present a traditional memento to Srimati Shashi Tripathi. श्रीमती प्रिया हरि द्वारा श्रीमती शशि त्रिपाठी को पारंपरिक स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। May I now request Srimati Priya Hari to present a traditional memento to Srimati Bulbul Lal. श्रीमती प्रिया हरि द्वारा श्रीमती बुलबुल लाल को पारंपरिक स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। Ladies and gentlemen, we are now commencing the traditional part of the launching ceremony. We start with invocation in Sanskrit, followed by English. अदिति ध्यौरदितरन्तरिक्षं दितिर्माता शपिता सपुत्रे विश्वदेवाय अदितिः पञ्चजना अदिति जमितिर्जनित्यं महिमुषु मात्रं सुव्रतानामस्य पत्नमवैषि हवामहे तविछात्रामजरन्त मुरुञ्चो ससमणिमर्दितं सत्रामाणं पृथिवी घामनेहं सुषमणिमर्दितं सुप्रणोतिमं देवी नावं स्वरित्रानभागसो अस्त्रवती मारुहे मा स्वस्तये वजस्यानुप्रशवे महीमदीर्ति नाम वत्सा करामहे यस्य उपस्या उर्वन्तरिक्षं सानः हाम्र त्रिवरुथन नियाचत. Thou art the heavens, O Aditi, and thou art the unfathomable space. By thee we art measured and protected, and thou art us, thy children. Thou art all the gods in heaven. Thou art the 5 nations. Thou art our present and future. Thou, the measure of goodness. Thou, the mistress of righteousness. To thee we tender our offering. Far flung are thy domains, ever widening, ever prospering. Happy, O Aditi, and blessed in thy guidance. With thy blessings we embark on the ship that rides well the waves. So broad in beam and spacious, comfortable, resplendent. Blessed are her courses, her rudders strong. Faultless in construction, her bilges dry. So with the words of praise to thee we embark on this venture, that prosperity may flow with thy thrice blessed protection, O Aditi, who art thyself, the spirit of the earth and the space and the heavens. May we now request Vice Admiral Dinesh Tripathi, FOC in Sea Western Naval Command, Shri Arun Lal, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWPNA, CMD GRSE, Commodore PR Hari, Rear Admiral Sandeep Mehta, ACWPNA, Srimati Shashi Tripathi, Srimati Priya Hari, Srimati Bulbul Lal, and Directors of GRSE to please proceed to the ship Yard 3035, the second ASW shallow water craft for the Puja Ceremony. पवित्र पूजा की रस्मों के निर्वहन हेतु हमारे आज के सभी विशिष्ट अतिथि और हमारे जीआरसी के निदेशकगण पूजा स्थल पर पधार चुके हैं। पूजा के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों का प्रारंभ पोत पर कुमकुम लगाए जाने के साथ पोत और पोत पर सवार होने वाले नाविकों के मंगल एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना तथा पोत के मालार्पण के साथ होगा। Puja in progress, ladies and gentlemen. पवित्र पूजा हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा की जा रही है।
किसी भी शुभ कार्य के पूर्व हमारी जो परंपरा रही है पूजा की, उसका निर्वहन हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। The sequence that is being followed for the Puja ceremony will begin with application of kumkum, prayer for the good health and prosperity of all who sail on her, and garlanding the ship. पूजा के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों का प्रारंभ पोत पर कुमकुम लगाने जाने के साथ ही प्रारंभ हो चुका है। और आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शशि त्रिपाठी द्वारा कुमकुम लगाया जा रहा है पोत पर। हमारी मुख्य महिला अतिथि श्रीमती शशि त्रिपाठी के द्वारा पोत पर कुमकुम लगाए जाने की पवित्र रस्म। Application of kumkum in progress, ladies and gentlemen. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं किस प्रकार पोत पर कुमकुम लगाया जा रहा है। कुमकुम लगाए जाने के पश्चात हम पोत का मालार्पण होगा। पोत के मालार्पण की पारंपरिक रस्म हमारी मुख्य महिला अतिथि श्रीमती शशि त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है। Garlanding of the ship by Srimati Shashi Tripathi. May I now request the dignitaries to kindly allow us to capture this historic moment in a photograph with the majestic ship in the background. हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि हमें इस ऐतिहासिक क्षण को पोत की पृष्ठभूमि के साथ तस्वीरों में कैद करने की अनुमति प्रदान करें। ये स्वर्णिम पल हैं जिन्हें सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। A historic moment, ladies and gentlemen, with this majestic ship behind the dignitaries before she gets launched and tastes water for the first time. पीछे ये अद्भुत पोत और सामने हमारे विशिष्ट अतिथि। ये खूबसूरत नज़ारा और इन स्वर्णिम पलों को हम कैद करना चाहेंगे। May I now request the dignitaries to move back towards the dais for the launching activities. हमारे विशिष्ट अतिथियों से जलावतरण गतिविधियों हेतु मंच पर वापस आने का सादर अनुरोध है। Our friends from the media want to have their unique photograph capturing this historic moment, and our dignitaries kindly consenting to the same. इन ऐतिहासिक पलों को हर कोई सहेज कर रखना चाहता है।
और अब अगला क्रम पारंपरिक रूप से नारियल तोड़ने की रस्म का है। May I now request Srimati Shashi Tripathi to traditionally break the coconut by pressing the button. That was the breaking of the coconut. Ladies and gentlemen, may I now request our lady dignitary, Srimati Shashi Tripathi, to perform the naming ceremony of the ship. मैं इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत आंद्रोत रखती हूँ। इस पोत और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। May I I now name this request ship Indian Naval Ship and Androt. May good fortune attend her and all those who sail in her. May I now request Srimati Shashi Tripathi to unveil the name plaque by pressing the button. That's the unveiling of the name plaque, ladies and gentlemen. And she gets her name. पोत की नाम पट्टिका का अनावरण और पोत को आज से नया नाम मिला आंद्रोत। And finally, the historic moment has arrived. May I now request Srimati Shashi Tripathi to launch this majestic ASW shallow watercraft Yard 3035 Androt by pressing the button. और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारी आज की विशिष्ट महिला अतिथि श्रीमती शशि त्रिपाठी द्वारा बटन दबाकर एएसडब्ल्यू सैलो वाटरक्राफ्ट यार्ड 3035 के इस अद्भुत एवं उन्नत पोत आंद्रोत का जलावतरण। Ladies and gentlemen, that was the launching of the ship. ये जो पल हैं ये सहेज कर रखे जाने वाले पल हैं जो बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। Launching of the ship signifying culmination of the first part of ship construction, which include hull and superstructure. The ship looks truly majestic. It is a matter of great pride and joy for all of us.
Launching a ship requires great technical and design competency. It is the culmination of months of hard work in designing, planning, fabrication, production, installation, alignment, and is a source of encouragement for one and all. देवी और सज्जनों, किसी पोत का जलावतरण पोत निर्माण के प्रथम भाग के पूरा होने को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत हल एवं उसका सुपर स्ट्रक्चर शामिल है। ये पोत अपने भव्य रूप में है। आज का दिन जीआरएसई के सभी स्तर के कार्मिकों के लिए गौरवशाली दिन है। किसी पोत के जलावतरण के लिए अत्यधिक तकनीकी और डिजाइन सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यह डिजाइनिंग, प्लानिंग, फैब्रिकेशन, उत्पादन, संस्थापन, क्रमबद्धता में महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह वास्तव में हम सभी के लिए प्रोत्साहनवर्धक है। पोत को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने एवं जलावतरण हेतु तैयार करने में शामिल सभी के लिए यह बेहद गर्व का विषय है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। Ladies and gentlemen, you are now requested to please stand for the national anthem. देवी और सज्जनों, आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का अनुरोध है। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी से खड़े होने का अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, this marks the culmination of the launch event today, and you may now kindly proceed for refreshments at the VIP and VVIP enclosures. देवी और सज्जनों, इसी के साथ आज का यह जलावतरण समारोह का समापन होता है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीआईपी और वीवीआईपी इनक्लोजर में जलपान के लिए प्रस्थान करें।